using traditional techniques to create terracotta artifacts for centuries. But without access to modern technology, they were struggling to make ends meet. Their designs were not working for modern markets. The marketing end of the product was also a challenge. मेन जो दिक्कत है, तो दिक्कत ये है कि इसमें मेहनत बहुत काफ़ी है और ये चाक के ऊपर काम करते हैं तो मेहनत है और उसमें क्वालिटी नहीं निकलती है तो प्रोडक्शन बहुत कम लगता है. The scientists at CSIR's Glass and Ceramic Research Institute in Ahmedabad decided to intervene to try and revive this art form. कन्वेंशनल जो सिरामिक पॉटरी लोग बनाते थे बहुत पुराने सालों से, आज धीरे धीरे वो लुप्त हो रहा है. सेंट्रल का सिरामिक इंस्टीट्यूट कोशिश किए थे. इस लुप्त होने के लिए जो कारण था उसको हम लोग पहले से सोच के देख के हम लोग एक नया तरफ से एक साइंटिफिक डेवलपमेंट किया है, जिसके तहत हमने अलग अलग रूप से टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की हिसाब से हमने टेराकोटा पॉटरी को एक नया रूप देने की कोशिश की, जिसमें लोगों की रोजगार मिले, लोगों के अंदर एक उत्साह बढ़ा मिले और साथ साथ नए जनरेशन जो लोग जो ये ट्रेडिशनल आर्ट छोड़ चुके हैं वो फिर वापस आ सके. How could science make the life of the potter here easier? Well, most of these potters used a hand-operated wheel. Could simple mechanization simplify their lives? A shift was made to a ball-bearing based wheel or an electrical chuck. The artisans were trained in areas like clay characterization, processing of clay, various forming and shaping techniques like slip casting, throwing on a potter's wheel, pressing, plugging, and related technical features. Simple, effective interventions like the creation of a mold made the whole process less strenuous, especially for women artisans. कास्टिंग पद्धति का फायदा ये है, ये काम लेडीज जेंट्स कोई भी कर सकता है और उसका क्वालिटी बहुत अच्छा निकलता है. इसकी वजह से इसकी आमदनी में और इसका वैल्यू एडिशन काफ़ी अच्छा है, तो उसकी आमदनी में बहुत अच्छा फायदा मिलता है. Ideas were given on how to broaden the kind of designs to appeal to a modern-day audience. The community were also advised on packaging, marketing, and given inputs on how to run a business. पहले मैं बाहर जाके काम कर रहा था, अभी इधर गांव में आया तो मैंने देखा है 5 दिन का प्रोग्राम है, मुझे अच्छा लगा. टेराकोटा जो सामान बन रहा है वो ज्वेलरी है, बोतल है, ऐसे ऐसे मेरे को बहुत अच्छा लगा है. अभी मेरे को बाहर जाने का कोई जरूरत नहीं है. Terracotta is a completely biodegradable material, and so, along with improving livelihoods and reviving handicrafts, it also gives us a much needed green solution.